Recording in progress. जी पेपर 4 अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंस 42 अब इसको डिस्कस करते हैं. A student uses the apparatus to separate a mixture of 3 alkanes. ये वाटर इन है, यहां से वाटर आउट है. ये नोट करने की बात है, ये एक एरर हो गया. ठीक है. नेम apparatus A, तो बेटा आप बोलोगे कंडेंसर. Name apparatus B, fractionating column. ठीक है. Identify 2 errors in the assembled apparatus shown in the diagram. Water in and water out should be reversed. राइट. और दूसरा एरर क्या है? ये जो रिसीवर फ्लास्क है ये ओपन होनी चाहिए, वरना प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से बर्स्ट हो जाए. फ्लास्क, रिसीवर फ्लास्क ओपन. ठीक है. The errors are corrected. The mixture of alkanes is heated in the flask to start the separation. The boiling point of alkanes are shown. ठीक है. आप देखें number of carbon atoms बढ़ रहे हैं तो boiling point भी बढ़ रहा है. सही है. Suggest why the flask is not heated directly to the flame on a Bunsen, because all alkanes are flammable. Because hydrocarbons are flammable. State why the flask is not heated with a beaker of boiling water. क्योंकि boiling water जो होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि तमाम एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है. Because boiling point of alkane is greater than 100 degrees Celsius. Name a piece of apparatus that is suitable to heat the flask. So beta, electric heater. Name the first alkane collected in the conical flask. Explain your answer. तो सबसे पहला alkane होगा वो आपके पास ऑक्टेन होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है. Fraction with a low boiling point will collect first. State the purpose of apparatus B. Apparatus B, fractionating column, इसमें होती है ग्लास बीड्स, और ये ग्लास बीड्स का फंक्शन ये होता है कि ये वेपर्स को सेपरेट करने में हेल्प करती हैं. जो लो बॉइलिंग वेपर्स होते हैं वो पहले चले जाते हैं, जो हाई बॉइलिंग वेपर्स होते हैं वो बाद में आते हैं. ठीक है. तो आप लिख सकते हैं इधर ये to separate the vapors. ठीक है. किसका बेटे? फ्रैक्शनिंग कॉलम ना, ग्लास बीड्स. Question number 2. A student investigates the reaction between zinc and dilute sulfuric acid. The equation for the reaction is shown. The student observes bubbles of a gas being produced when zinc is added to dilute sulfuric acid. The student does a test to show that the gas is hydrogen. Test and observation to identify hydrogen gas. Burning splinter.
burning splinter in the gas jar, तो फिर हम क्या बोलेंगे? Burns or extinguishes with a pop sound. State one other observation the student makes when zinc is added to dilute sulfuric acid. ये जो zinc है ये solid होता है, solid dissolves, solid disappear. Range color. A student does an experiment to find out how the rate of this reaction changes as the temperature of dilute sulfuric acid changes. Method: the student measures 100 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid and pours this into a beaker. Place a thermometer in the acid, heats the acid to the required temperature, remove the heat, add a known mass of zinc to the acid, immediately start a clock, stop the clock when all the zinc had reacted, record this reaction time. The student repeats the experiment several times at different temperature intervals. At different temperatures, all other variables likely to affect the rate of reaction are kept constant in each experiment. Okay. The results are shown in the table. B part 1, state which experiment has an anomalous reaction time. Why fourth? Okay. Fourth, suggest what the student should do to check if the reaction time in B1 is anomalous. जी क्या करेंगे? रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को, सही है? Repeat the experiment. और ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट किस टेम्परेचर के ऊपर हो रहा था? 60 पे. तो मैं रिपीट करूंगा एक्सपेरिमेंट at 60 degrees Celsius. State which experiment has the greatest rate of reaction. जिसका reaction time सबसे कम होगा. That is 5. Describe how the rate of this reaction changes as the temperature of dilute sulfuric acid increases. Dilute sulfuric acid का temperature increase करेंगे, rate of reaction increase होगा. Rate of reaction increases because kinetic energy and collision frequency increases. Another student does the reaction at 90 degrees Celsius. State why it is difficult to measure an accurate reaction at 90 degrees Celsius. तो भाई 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर को मेजर करना डिफिकल्ट होगा बिकॉज ये देखो 70 पे रिएक्शन टाइम कितना आ रहा है? 2 सेकंड्स. तो जब 90 करोगे तो जाहिर सी बात है उसका जो टाइम होगा वो इससे भी ज्यादा कम होगा जो कि अनमेजरेबल होगा. ठीक है, सो हम यहां लिख देते हैं because it is very difficult to measure shorter time intervals. ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं आपसे suggest 2 variables other than temperature and dilute hydrochloric acid or the mass of zinc that affects the rate of this reaction. बेटा सबसे पहला है आपके पास concentration,
ऑफ HCl और दूसरा क्या होगा कैटलिस्ट सर पार्टिकल साइज बिल्कुल कह सकते हैं पार्टिकल साइज लिख लीजिए यहाँ पर कैटलिस्ट की बजाय जिंक पाउडर फॉर्म में अगर यूज कर लें यानी सरफेस एरिया इंक्रीज कर दें तो भी हो जाएगा ठीक है तो इस साइज पे लिखनी है सिर्फ पार्टिकल साइज लिखनी है तो मॉड मिल जाएगा हाँ Question number 3. A student is provided with 3 unlabeled bottles which can each contain a solution. The student knows the bottle contain dilute hydrochloric acid, aqueous aluminum sulfate, aqueous zinc sulfate. The student is provided with dilute nitric acid, silver nitrate, aqueous ammonia. Guys, these are the important tools. और ये भी ध्यान में रखो कि reagents तुम्हारे पास ये हैं. But no other chemicals or indicators. For each of the 3 unlabeled bottles, describe a test and give the observation to identify the content of the bottle. You must describe the test that gives the positive result to identify the content of each bottle. Okay. Sorry. Okay. It must be clear in your answer which solution is identified by each positive result. Chemical equations are not required. So, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे for hydrochloric acid. कल इस पैटर्न का एक क्वेश्चन करवाया था मैंने याद है आपको टेस्ट क्या होगा एड सिल्वर नाइट्रेट followed by dilute nitric acid. Observation क्या होगी white precipitates. ठीक है इसके बाद for aqueous aluminum sulfate टेस्ट क्या होगा add aqueous ammonia until it is in excess. Observation क्या लोगे बेटा white precipitates remains insoluble. ठीक है for zinc sulfate for zinc sulfate test aqueous ammonia until it's in excess. Observation क्या होगी white precipitates soluble in excess aqueous ammonia. तो आपको सॉल्ट एनालिसिस जो पढ़ाई थी ना मैंने बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए रिएजेंट्स भी याद होने चाहिए कंडीशंस भी याद होने चाहिए और फॉर्मेट चेंज कर दिए यानी आपको रिएजेंट भी पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन भी पता होना चाहिए सब पता होना चाहिए आपको क्योंकि सब आपसे लिखवाना है पहले तो ये चार्ट बना मैं लिखता था ना हम सब ऑब्जर्वेशन लिख दिया करते थे तो सब लिखवा रहा है हमसे कोई बात नहीं हमारा भी वक्त आएगा
A solid mixture contain iron 2 sulfate and sand. The student determine the percentage or mass of iron 2 sulfate in the mixture. The student measure the mass of an empty beaker. The student adds a sample of the mixture to the beaker and then measure the mass of the beaker in the mixture. इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा. तो बताइए कितना आएगा? 1 minute 55.96 minus 36.02 is going to be how much? 19.94 grams. The student adds water to the mixture in the beaker. ठीक है. Iron 2 sulfate dissolves in the water. Sand does not dissolve or react with the water. ठीक. The sand is separated from the aqueous iron 2 sulfate by filtration. ये दिखाई भी उन्होंने पूरी filtration आपको. यहाँ पर filtration हो रही है. Suggest how the student make sure that no iron 2 sulfate remains on the filter paper. Wash the residue with distilled water. तो अगर वहां पर iron 2 sulfate होगा तो वो dissolve होकर filtrate में आ जाए. ठीक है. Aqueous iron sulfate is transferred from the conical flask into a volumetric flask. Suggest how the student should make sure that all the aqueous iron sulfate is transferred from the conical flask to the volumetric flask. जब आप solution को volumetric flask में transfer कर लेंगे ना तो कुछ ना कुछ solution conical flask में रह जाएगा. आप उसके अंदर distilled water ऐड करें और जो washing है ना वो भी सारी की सारी ऐड कर दीजिए. All the washings in the conical flask will transfer into the volumetric flask. The solution in the volumetric flask is made up to 500 cm with water. This is solution R. The student uses a pipette together with another pieces of apparatus to place 20 cm cube of R into the conical flask. Name the other piece of apparatus that is used with the pipette. Pipette filler. सही है. The student adds excess dilute sulfuric acid to the conical flask. Solution T is 0.02 mole per dl potassium permanganate 7. Fills a burette with T. इसका मतलब conical flask में iron 2 sulfate है और burette के अंदर KMnO4 है. Runs T into the conical flask until the end point is reached. Solution T reacts with iron 2 sulfate in the conical flask. ये important बात थी. Iron 2 sulfate is the reducing agent. Another very important information because potassium permanganate 7 is an oxidizing agent. ठीक है. State the color change in the conical flask at the end of each titration. मैंने अभी 2 दिन पहले भी आपको ये बात समझाई थी कि conical flask में iron 2 sulfate यानी FeSO4 का solution है, right? और वो ग्रीन कलर का होता है. जब आप उस solution के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो, it turns to colorless. तो टाइट्रेशन स्टार्ट होने से पहले कलर क्या होगा? कलरलेस. और जब आप ब्यूरेट से KMnO4 ऐड करेंगे इनटू द कॉनिकल फ्लास्क इट विल टर्न टू पिंक. ठीक है. नोट्स चेक कीजिएगा. नोट्स में भी लिखा हुआ है कलरलेस टू पिंक होता है. सर HCl भी है क्या आयरन सल्फेट? सल्फ्यूरिक एसिड है. सर एक ही कॉनिकल फ्लास्क में सर. जी जी. मैंने समझाया अभी. कॉनिकल फ्लास्क है उसमें आयरन 2 सल्फेट लिया हुआ है व्हिच हैज अ ग्रीन कलर. उसी कॉनिकल फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगा फॉरन कलरलेस हो जाएगा. तो टाइट्रेशन से पहले कॉनिकल फ्लास्क का कलर क्या नजर आ रहा होगा? अब आपने KMnO4 ऐड किया ब्यूरेट से कॉनिकल फ्लास्क में तो जाहिर सी बात है रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इट विल टर्न टू व्हाट? पिंक. लेकिन ये तो एसिड आइडेंटिफाई कर नहीं
The student does 3 titrations. The diagram shows part of the burette with the liquid levels at the beginning and at the end of each titration. ये हो जाएगा आपके पास 0.0 और ये हो जाएगा 5 6 7 8 26.8, ठीक है। फिर आपके पास 1 2 3 4 12.4 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 38.4। फिर आपके पास 1 2 3 12.3 और ये हो जाएगा बेटा 39.1। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 26.8। यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा बेटा 26। एक मिनट बेटा, इंपॉर्टेंट कॉल है, यहाँ से स्टॉप करो। Recording in progress. Recording in progress. All right बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। ये डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 26.0 और ये डिफरेंस आ रहा है मेरे पास 26.8 एंड ऑब्वियसली ये दोनों बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स हैं और इनका एवरेज वॉल्यूम भी 26.8 ही होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं 0.02 मोल पर डीएमक्यू पोटेशियम मैग्नेट 7 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम मैग्नेट 7 इन द एवरेज वॉल्यूम। तो बेटा 1000 cm³ में आपके पास 0.020 मोल्स हैं, लेकिन अगर एवरेज वॉल्यूम आपके पास 26.8 था तो बताइए मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा। तो ये आपके पास आ रहे हैं 5.36 into 10 to the power -4 moles। फिर वो आपसे कह रहे हैं 1 mole of potassium magnate 7 reacts with 5 moles of iron 2 sulfate, calculate the number of moles of FeSO4 in 20 cm³ of R। सो ये हो जाएगा आपके पास MnO4 नेगेटिव and Fe2 प्लस, ये 1 मोल Recording in progress. ये 1:5 का रेशियो, ठीक है। आपके पास ये है 5.36 into 10 to the power -4। तो बताइए ये कितने होंगे। तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 2.68 into 10 to the power -3 moles। Calculate the number of moles of FeSO4 in 500 cm³। तो बेटा 20 cm³ में आपके पास 2.68 into 10 to the power -3 moles है। 500 cm³ में कितने हैं। ये हो जाएगा 0.067 moles। Calculate the mass of FeSO4 in 500 cm³ of R। तो बेटा मास ऑफ FeSO4 कैलकुलेट करना है। जो मोल्स Fe2 प्लस साइंस के हैं वही मोल्स FeSO4 के हैं। तो 0.067 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 152 से, क्योंकि 152 एग्जामिनर ने दिया हुआ है। तो मेरे पास मास आ जाएगा 10.184 ग्राम। ए और जे को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगा बाय मास। तो 10.184 डिवाइडेड बाय 19 कितना था बेटा 19.94 into 100। तो बताइए कितना आ जाएगा आपके पास 51.1%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो करें अ कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म। इसका मतलब S contain transition metal ion। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं S contain copper ions on the addition of aqueous ammonia until it is changed। तो आप बताइए dark blue precipitates, और फिर जब एक्वस अमोनिया ऐड करते हैं तो प्रेसिपिटेट्स
are soluble giving dark blue solution। फिर वो कह रहे हैं आपसे कि एक्वस कॉपर टू आयंस हैं और आप उसमें NaOH ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनेंगे यहाँ पर, और एक्सेस एक्वस अमोनिया में ब्लू प्रेसिपिटेट्स रिमेंस इनसॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं एज कंटेन अमोनियम आयन, आपने NaOH ऐड किया था ऑलरेडी, जब आपने उसको हीट किया मिक्सचर को तो गैस रिलीज हुई व्हिच टर्न्स डैम रेडिएटर्स टू ब्लू। तो आप बताएंगे अमोनिया गैस इज गिवन ऑफ which turns red rectus into blue। पहले आपके पास S contain sulfate ions white precipitates बने, तो बेटा आप लिखेंगे aqueous right। Recording in progress. ठीक है बेटे, मुझे आप 5 मिनट्स दे दो बच्चों, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता हूं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन। Recording in progress. Thank you guys for the time। When aqueous sodium hydroxide is added dilute sulfuric acid to a reaction, ये equation आ गई। A student has two solution, W is 2 mole per dm cube NaOH, X is H2SO4 of unknown concentration। The student determine the concentration of X, यानी मुझे सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है इस रिएक्शन के थ्रू। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, हमने 20 cm क्यूब ऑफ W यानी NaOH को ग्लास बीकर में डाला। ग्लास बीकर में डालने के बाद हमने बिफोर द रिएक्शन W का टेंपरेचर रिकॉर्ड किया, 5 cm क्यूब ऑफ X यानी H2SO4 ऐड किया हमने इनटू द बीकर, मिक्सचर को स्टर किया, मेजर किया हाईएस्ट टेंपरेचर रीच, उसके बाद कैलकुलेट किया इंक्रीज इन टेंपरेचर, और फिर हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया विद डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ X। एक्सपेरिमेंट हमारे पास आए, ऑब्जर्वेशन भी आ गई। वो कह रहे हैं द स्टूडेंट यूजेस अ ब्यूरेट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ W and X। Suggest why the student uses a burette instead of a measuring cylinder? Because burette ज्यादा एक precise result और accurate result provide करती है। Burette gives accurate volume than measuring cylinder। State the evidence in the table that shows that the reaction is exothermic। तो आप बताइए टेम्परेचर राइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है मुसलसल, all the temperature increases। ठीक है, plot the results from the graph on the grid, draw one straight line to the first 3 points, straight line through the first 3 points, second straight line through the other 3 points, extend both straight lines until they intersect। ठीक है, ये मैंने बना दिया बेटा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो उसको सर्किल भी कर सकते हैं। और सर्किल करके देना भी चाहिए। Use your graph to answer these questions। Determine the volume of X that produces a temperature increase of 5.6 when added to 20 cm cube of W। तो 5.6 ये टेम्परेचर आ रहा है बेटा मेरे पास,
5.6 समथिंग अराउंड हियर, और अगर मैं यहां से 10 निकालूं तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे पास, तो मेरे पास आ रहा है 10.5. Determine the temperature increase if 12.5 cm cube of X is at 20 cm cube of this. ट्वेल्व पॉइंट फाइव के ऊपर ये देखिए, ये 12.5 है आपका. एक मिनट बेटा मैं दिखा दूं. दिस इज योर 12.5. तो ये आ रहा है 6.6 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, use your graph to determine the minimum volume of X that reacts with all the NaOH in 20 cm cube. तो ये हो रहा है बेटा तकरीबन कैलकुलेशन के बाद 18.0. ठीक है, और वो हमने ये कैलकुलेट किया. फिर वो कह रहे हैं W is 2 mole per dm cube NaOH. Use your answer to E1 and the equation to calculate the concentration of H2SO4. NaOH 2 मोल पर dm क्यूब और 20 cm क्यूब ऑफ W यूज हुआ है, तो मैं मोल्स ऑफ NaOH यूज कर सकता हूं. तो ये हो जाएगा 2 into 20 divided by 1000. तो बेटा मेरे पास यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.04 मोल्स. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, NaOH और H2SO4 इन दोनों के दरमियान रेशियो कितना होगा बेटा? 2:1. तो अगर आपने 0.04 मोल्स कैलकुलेट किए तो मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएंगे 0.02. आपको H2SO4 की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, और आपने H2SO4 का वॉल्यूम कितना यूज किया था बेटा? 5 cm cube of X. सॉरी 18 cm cube निकाला था ना आपने, सॉरी ये निकाला था X 18 cm cube. तो 18 cm cube में 0.02 moles of H2SO4. कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1000 cm cube से कंपेयर करूंगा, तो मेरे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी बेटा 1.11 मोल पर dm. 1.11 मोल पर dm cube. ठीक है, that's all from the paper.